Welcome to We Learn. Session 1 Business Policy Introduction to Strategic Management. Topic cover: Introduction, Meaning of Strategy, Nature of Strategy, Purpose of Strategy, Elements of Strategy, Strategy versus Policies, Strategy versus Tactics, the Psychologies of Strategic Management, the Limitations of Strategic Management, Failure of Strategic Plans, Importance of Strategic. Now the introduction. Yes, as we were all discussing, or we will now start discussing about the about the strategic management, about the business policy, that what exactly they are. So in terms of strategic management, strategic is a kind of a method, or it's a kind of a tactics in which the organization is actually required to perform. So business strategies are more towards the developing the tactics part of the organization, as we will already discussed that. So the purpose of the strategies making is basically to bring out the capabilities in the organization to perform the certain task. So yes, as it is just to generating the systematical procedure, just to bringing out something which is most applicable in the concepts of the strategic management. So yes, there was a requirement of a top management always. So as the slides are mentioning, the top management of an organization is concerned with the selection of a course of action from among the different alternatives to meet the organizational objective. The purpose by which the objectives are formulated and achieved is known as strategic management, and the strategy act as a means to achieve the objective. So top management are basically concerned about all the selections of that course of action which is required to perform, or which is required to generate the objectives, or to achieve that particular objectives. So in that case, yes, the strategic management or strategy is basically a process through which the various kinds of objectives are formulated and achieved, and the strategies act as a means to achieve the objective. Strategy is a grand design or an overall plan which an organization choose in order to move or react towards the set objective by using its resources. Yes, strategies अपने आप में एक स्टेप होता है या एक मूव होता है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है. दैट मीन्स इट्स अ सेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव थ्रू विच ही इज लाइबल टू generate or liable to get that benefits from the objectives. So now, meaning of strategy. What is the basic meaning of strategy? Strategy is unified, comprehensive, integrated plan that relates the strategic advantages of a firm to challenges of the environment, and is designed to ensure that the basic objective of the enterprise are to achieve through the proper implementation. So strategies is one of the unified or comprehensive integrative plan. That means ये एक ऐसा plan होता है which is actually bring to come out with the certain challenges and come out with the certain advantages which actually lead the organization to achieve the various advantages for the business firm. So we can say that the strategy is the common direction set of a company. ये common direction set होती है and its various component to accomplish the kind of a desired position. Or we can say that business strategy is used basically to achieve the competitive advantage, or it is a fundamental concept to require to direct an organization to create the sustainability and successful plans. Strategy, yes, it is as an action. It can be inclusive of the objective setting, and yes, at the same time exclusive of the objective setting. So in both the cases, it is inclusive and exclusive objectives. Now the nature of strategy. What kind of a nature of a strategy actually exists? So the first is, strategy is the major course of action through which an organization relates itself to its environment. Strategy एक वो course of action होता है जिसके थ्रू एक organization अपने आप को environment से relate कर सकती है. That means they were more towards the environmental concern, environmental part. Strategy is a blend of the internal and external factor. Yes, it is one of, बिकॉज किसी भी तरीके की स्ट्रैटेजीज को स्टार्टअप करने से पहले कंपनी रिक्वायर्ड टू जनरेट सर्टन काइंड ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. स्ट्रैटेजी इज फ्यूचर ओरिएंटेड. येस, इट इज़ वन ऑफ द फ्यूचर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बिकॉज कंपनीज आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स फ्यूचर. दे वर मोर कंसीडरिंग द फ्यूचर पार्ट. वो फ्यूचर्स को लेकर ज़्यादा अवेयर होती हैं, ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं.
Then strategy required some systems and norms for its efficient adoption in the any organization. किसी भी तरीके से strategies को adopt करना है, किसी भी तरीके से strategies को follow करना है, उसके इसके लिए भी required efficiencies and various system and norms. Then strategy provides overall framework for guiding the enterprise thinking and action. Yes, it is basically the course of action which provides certain kind of direction, जो आपको direction provide करते हैं organization को objective को कैसे fulfill करना है, उस तरीके से काम करते हैं. And that comes, yes, strategy basically provides the overall framework. ये एक proper framework create करते हैं through which the proper गाइडेंस और द प्रॉपर थिंकिंग वॉज कम्स इन टू अ पिक्चर कि उस थिंकिंग को फुलफिल करने के लिए किस तरीके के एक्शंस फॉलो करने. देन येस, द पर्पस ऑफ स्ट्रैटेजी. पर्पस ऑफ स्ट्रैटेजी में सबसे पहला होता है जस्ट टू कैप्चर द मास मार्केट, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को मास मार्केट को अचीव करना हो. सेकेंड इज टर्न द विजन इन टू द एक्शन, व्हेन द कंपनी इज एक्चुअली लुकिंग टूवर्ड्स टर्निंग योर विजन्स इनटू द एक्शंस, यानी कि आप फोरकास्टिंग काइंड ऑफ टेक्निक, आपने जो सोचा है उसे अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसे अचीव करने के लिए किस तरीके के एक्शंस जो भी लिए जाएंगे वो स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है. टू रिमेन कंपेटिटिव इन मार्केट, येस, मार्केट के अंदर एक कंपटीशन बनाए रखने के लिए, मार्केट में अपनी एक पोजीशन बनाए रखने के लिए वी नीड पर्पसेस ऑफ स्ट्रैटेजी. एंड येस, एट द सेम टाइम प्रमोट ग्रोथ. प्रमोट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ दैट मीन्स कि आपको किसी भी तरीके से ग्रोथ को प्रमोट करना है एंड यू वांट टू ग्रो मोर, सो इन केस यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी के बेसिकली ये 4 पर्पस होते हैं. जब कंपनी मार्केट के अंदर अच्छा शेयर क्रिएट करना चाहती है, जब अच्छे से फोकस करना चाहती है, जब ग्रो करना चाहती है और वो कंपटीशन में बने रहना चाहती है, सो उसके लिए वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है, टेक्निक्स अडॉप्ट करती है, टैक्टिक अडॉप्ट करती है जिसके थ्रू वो प्रॉपर वर्किंग कर सके. Now the elements of strategy. Elements of strategies are basically, which we are seeing in green, these are basically the elements of strategy. The goals, scope, competitive advantage and logic. These are the 4 elements of a strategy. If you talk about the goals, goals are basically long or a short term goals of a firm. ये short term और long term goals होते हैं firm के. Scope is a kind of a product the firm will be offer. मेरे पास कितना ज़्यादा स्कोप है. इफ़ आई एम ऑफरिंग द XYZ प्रोडक्ट इन अ मार्केट, तो उस XYZ की मैं कितनी मॉडिफिकेशंस इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, दैट्स कम्स इनटू द स्कोप पार्ट. देन कंपैरेटिव एडवांटेज. कंपैरेटिव एडवांटेज आर बेसिकली दोज काइंड ऑफ इन अ स्ट्रैटेजी विच इज टेकन जस्ट टू गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम द मार्केट. सो इन दैट केस व्हाट स्ट्रैटेजी टू बी टेकन टू गेन एन एज ओवर द अदर्स इन द मार्केट. लॉजिक. what logic has been followed in which situation, very important for the development and growth in a market. मार्केट के अंदर ग्रो करने के लिए, मार्केट में डेवलप होने के लिए, मार्केट में एक पॉजिटिव सिचुएशंस को अडॉप्ट करने के लिए किस तरीके के लॉजिक्स अप्लाई होते हैं. सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स विच हैव टू बी कंसीडर: गोल, स्कोप, कंपैटिटिव एडवांटेज एंड लॉजिक. Then strategy versus policies. Yes, strategy. If we were talking about the strategy versus policies, so it is more or less discussing about how strategy is related to policy. Policies होती हैं जब हम लोग किसी तरीके की guidelines provide करते हैं organization के अंदर, whereas strategies again it's a kind of a direction providing guidelines. So in that case दोनों के बीच में difference क्या है and how they both actually working separately or togetherness, किस तरीके से ये आपस में एक दूसरे से related हैं. So this is a concept. If we were talking about policy, policy is more or less, yes, course oriented, the action oriented for the fulfillment of the set objective, general and specific objective, organizational or integrated one. So in that case, way for the successful implementations of the strategies. सो इन दैट केस पॉलिसी की अगर बात कर रहे हैं तो पॉलिसी बेसिकली एक कोर्स ऑफ एक्शन को जनरेट करती है, किस तरीके के एक्शंस लेने हैं वो बताती है. इट कुड बी जनरल पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं, इट कुड बी स्पेसिफिक ऑल्सो. ऑर्गेनाइजेशनल और इंटीग्रेटेड आर मोर टूवर्ड्स, या तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकती है और इट वुड बी फॉर द सिंगल डिपार्टमेंट दैट्स कम्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रेटेड. देन वे फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, जब किसी तरीके की प्रॉपर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशंस करनी हो, सो इन दैट कम्स वी नीड सर्टन काइंड ऑफ इन स्ट्रैटेजीज. सो इन दैट केस अगर देखा जाए तो पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज kind of same work करते हैं. they provide certain kind of a direction, but yes, at the same time they were
two very different things. Reason behind is strategies are more towards the forecasting part, जबकि आपकी जो policies होती हैं they could be general concepts. At the same time policy जितनी भी बनाई जाती हैं वो पूरी organization को ध्यान में रख कर बनाई जाती हैं, जबकि strategies organization के एक objective को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं. So both are directed towards the meeting organization objective. दोनों उसी पर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से objectives meet करने हैं organization के. But yes, at the same time, strategy is a rule for making the decisions while policy is the contingent decisions. जबकि हमारा जो strategies होते हैं वो सिर्फ rule making होते हैं और strategies are more towards the contingent decisions. Now, the strategies versus tactics. किस तरीके के ऐसे टेक्टिक्स होते हैं जो एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकती है. नेक्स्ट कम्स इनटू दी स्ट्रैटेजिक वर्सेस टैक्टिक्स. अगर टैक्टिक्स की बात की जाए तो टैक्टिक्स आर मोर रिलेटेड टूवर्ड्स दी डेलीगेशन ऑफ डिसीजंस इन ऑल दी डायरेक्शन, शॉर्ट लिव्ड एंड डिफाइंड, concerned with specific part of the organization, determined on the periodic basis, means by which the previously determined planning are executed, are form of the one part of the related group's action. Strategy has a long-term perspective and can be periodic or irregular, but it cannot be delegated to the low group of organization, a vital and inevitable action. Yes, tactics और strategies के अंदर अगर सबसे बड़ा difference देखा जाए तो उनके बीच में सबसे बड़ा difference ये होता है कि strategies are more related to the top management part, जबकि हमारी जो tactics होती हैं it can be delegated to the lower level. In that terms हमारे जो टैक्टिक्स होते हैं वो किसी भी तरीके से एक स्पेसिफिक कंसर्न के लिए भी बन सकते हैं, वो डेलीगेट भी हो सकते हैं, पीरियोडिक बेसिस पर भी एक छोटे से छोटे डिपार्टमेंट के अंदर भी टैक्टिक्स को फॉलो किया जा सकता है. बट अगर स्ट्रैटेजी की बात करें इट शुड बी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. उसमें किसी भी तरीके के लो ग्रुप में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, डेलीगेट नहीं कर सकते. इट्स रिक्वायर्ड टू बी लिटिल पीरियोडिकल रादर देन दी वेरी मच इरेगुलर. तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं स्ट्रैटेजीज में आते हैं. सो दैट्स कम्स इनटू दी स्ट्रैटेजिक वर्सेस टैक्टिक्स. So now there are few questions which you have to do it yourself. सबसे पहला है how strategy is different from the policy and tactics. So you have to define the both. ये दोनों आपस में कैसे अलग हैं. So you have to explain them. Then define the strategies and nature. आप strategies and nature what do you mean by strategy and what is its nature? तो आपको ये explain करना है. So yes, this is all about for the today's session. We were winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.